is the use of astronomy and space technology to explore outer space, right? So while the exploration of space is carried out mainly by astronomers with the telescopes and some other equipment that they are having, and the physical exploration though is conducted both by unmanned robotic space probes in space investigation and human space flight. ये इंसानों के जरिए और इंसानों के अलावा अनमैन्ड रोबोटिक स्पेस इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी की जाती है एंड ह्यूमन फ्लाइट स्पेस फ्लाइट के जरिए भी की जाती है. ओके, इज दैट क्लियर? Again, what is space exploration? Space exploration is the use of astronomy. Yes, बेटा, ये सेकेंड टर्म में से है, राइट? ये यूनिट और ये चैप्टर जो है ये आपको सेकेंड टर्म में शामिल किया गया और पढ़ाया गया. ओके, so I was telling you about space exploration is the use of astronomy and space technology to explore outer space. So while the exploration of space is carried out, so mainly by astronomers with their telescopes, their other equipment, physical exploration though is conducted both by unmanned robotic space investigation and human space flight. Okay, read the opinion. What's next? Read the opinions. ये बेटा पेज नंबर 34 पर इस ये जो पिक्चर दी गई है, जो तस्वीर दी गई है, इसके नीचे देखिए. One, read the opinions. Which one is illustrated by the picture above? Which one do you agree with? Here are three opinions, and we are going to choose one out of the three, and that is, I think there's the second one is the nice opinion that is illustrating and describing the picture. Okay, see what's that? I'm sure very large space station will be built, because तस्वीर में ये देखें ऊपर जो है ये कुछ स्टेशंस बनाए गए हैं जहाँ पर आपको ये नीचे लाइट्स नजर आ रही होंगी, जिस तरह से कि उधर कोई रह रहा है. ओके, ये नीचे सारा जो ये जमीन का सीन है, लैंडस्केप, और ऊपर जो है ये स्पेस स्टेशन, और ये जो इसकी सीलिंग है, सीलिंग के नीचे देखिए ये गैलरीज पर ये लाइट्स हैं. So in this way, I'm sure very large space stations will be built in the future. They'll be big enough for thousands of people to live on, which will be a good thing because soon there will be too many people for the earth. Space stations could help us to explore other planets as well, to see if we could live there. So this is the opinion that is actually explaining the picture. So what is that? Read the opinions. Which one is illustrated by the picture above? So by keeping this in mind, so this is the second one that's explaining nicely. Okay, question number 2. Question number 2. Listen to this discussion about exploring space. Which of the following statement is correct? 35, page number 35. Where is the opinion? Okay, which statement is correct? Okay, beta. So here is also the second one. But first of all, please let's give reading to these three statements. Number 1 is all the students are in favor of space exploration. Number 2, the majority of the students are in favor. Number 3, a minority of the students are in favor. So first, see,
all the students, this is impossible that all the students are in favor of space exploration. Some can oppose to this opinion, कुछ अपोज भी कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं कि नहीं जी नहीं होनी चाहिए, कुछ कहेंगे। तो ये सारे के सारे जो है वो एक ओपिनियन नहीं रखते, क्योंकि डिफर करते हैं, हम वेरी करते हैं अपने ओपिनियंस में। ओके, नंबर 2, द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन फेवर। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब एक जो स्ट्रेंथ है वो है, मगर उनमें कुछ जो है वो नेगेट करेंगे और ज्यादा जो है वो फेवर में जाएंगे। अ मिनॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन फेवर, ज्यादा नहीं है और कम फेवर में है, तो ये भी ठीक नहीं। द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन फेवर, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड ओपिनियन, दैट इज द ट्रू वन। This statement is correct. Second is correct. The majority of the students are in favor of space exploration. You can see on your screen, please, right now. The majority of the students are in favor of space exploration. वो कहते हैं जी space exploration करनी चाहिए। Question number 3. Listen again and correct any incorrect information in the summaries. ये जो नीचे summaries दी गई हैं, जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ओके, इनमें गलती क्या है, आपने इसको करेक्ट करना है। ओके, सो लेट्स सी आयशा, द फर्स्ट स्टूडेंट्स हु इज गिविंग हर स्टेटमेंट। तो ये लिखा है, वी शुड कीप ऑन एक्सप्लोरिंग स्पेस, वन डे पीपल विल लिव ऑन द मून, वन डे पीपल विल लिव ऑन द मून। मगर हमारी स्पेस साइंस तो कहती है कि चांद पर रहना ही पॉसिबल नहीं है, और ये सारी जो है वो वहां पर विजिट करके एंड आफ्टर कलेक्टिंग ऑल द प्रूफ्स दे हैव गिवन देयर conclusion that this is impossible for the people to live on the moon. So second line is incorrect. Okay, no living being can ever live on the moon due to some solid and sure reasons. Number 2, Oliver says we should send to find out more about them. What's that? We should send people to all the planets, in our solar system to find out more about them. So this is also impossible to send the people and to all the planets to collect and to find some more information about them. So beta, it is here. What a wrong idea it is. I have written here, people can't be sent to planets to find out more about them. Only trained spacemen can go to find more about them. इसकी जरा वेरिफिकेशन आप सबसे ऊपर वाले जो है इसकी डेफिनेशन में कर सकते हैं। ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है जनाब, स्पेस एक्सप्लोरेशन इज कैरिड आउट मेनली बाय एस्ट्रोनॉमर्स, ओके, विद टेलीस्कोप्स एंड सम अदर इक्विपमेंट्स। तो इस इनसे हो सकता है हम लोगों को भेजकर, और वो भी तमाम प्लैनेट्स पर, अब ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलेंगे। लेट्स सी व्हाट्स देयर। ओके, नेक्स्ट इज wait beta, okay, 2 and 3. Space tourism will be really popular in the future. Yes, this is possible because if the space science ये कुछ आगे बढ़ती है, ओके, ये डेवलप होती है और इससे भी ज्यादा, तो फिर space tourism will be really popular in the future. If it becomes space tourism, if becomes possible, then people would like to take interest in it. Okay, yes, tourism is possible. 4, Tommy, criminals will be sent to where? Where criminals will be sent to? 4, criminals will be sent to another planet or to a space station instead of prison. So my dear friends, people will not need, where is, okay, no, this is not true.
अदर प्लैनेट्स पर उनको क्रिमिनल्स भेजने की जरूरत नहीं. नो, दिस इज नॉट ट्रू. दिस इज अगेंस्ट द ह्यूमनिज्म. Therefore, criminals would stay on the planet Earth. Very simple कि ये ह्यूमनिज्म के खिलाफ है. क्योंकि वो इंसान है मगर उन्होंने क्राइम्स कमिट किए हैं, उनकी उनको सजा मिलेगी. लेकिन अगर तो उनको सपोज उनको इम्प्रिजनमेंट में जेल में डाल दिया जाता है, वो दे आर अलाउड टू लिव ओवर देयर. लेकिन उनको इम्प्रिजन कर दिया गया वहां पर. ठीक है. और ये जो है ये ट्रू नहीं है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको वहां पर प्लैनेट्स पर भेज दिया जाएगा कि चले भी आप वहां पर जाकर इनसे फिर बात करते हैं. So this is against the humanism. Okay. Criminals would stay on the planet Earth, but in imprisonment. Number 5, Nicholas. People will need people will need to live on other planets because the Earth will get too hot. So we won't be able to live here because the Earth is going to get too hot. So this is the reason which Nicholas has described here. So we won't be able to live here. My dear students, people will not need to live on other planets because the Earth will get hot, but also population will increase maximum as there will be no place for humans to stand even, right? Once I was reading an article, it was written there, population would increase maximum, and human would not be having any space to stand even. तो जो है उनको खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ सकती है. So अगर हमें दूसरे planets की जरूरत पड़ती है, if we are in need to explore some other places in space to live on, that's just because of population explosions, okay, not for the hardness of the earth. ये जमीन की ज्यादा हीट की वजह से या हरारत की वजह से, हार्डनेस की वजह से नहीं होगा, बल्कि पॉपुलेशन की वजह से है. बस God has made this earth and has put everything at proper level, right? It's a pre-planned project, pre-planned program of God. तो ऐसा नहीं, उसका हम पॉपुलेशन ज्यादा हो सकती है जिसकी वजह से हमें कहीं और जाने की जरूरत है. Question 4. Should we continue to explore space? क्या हमें स्पेस को एक्सप्लोर करने की जरूरत है? Yes. We should continue to explore space to find out more about space and so many other amazing things in it. Right? Because God has created so many amazing things in it. And I think there are lying so many things. Those are even hidden from the sight of man, even in this present developed time. Question 5. Fifth is, complete these sentences to give your own prediction. So, beta, first is, okay, let's read it again. Complete these sentences to give your own prediction about space exploration. This is, I'm reading on page number 35, consulting the book. Okay, beta, ये अपने जो है वो predictions देकर sentence को complete करें. आइए देखते हैं पहला क्या है. Number 1, people won't live on other planets. That people will live on other planets, people won't live on other planets. क्या है जनाब दूसरे, अगर तो हम ये समझते हैं, we think that yes, people would go to other planets to live over there, then we'll say people will live. But if we believe that this is not possible, then our prediction is people won't live on other planets. Space science says that this is impossible so far. Number 2, animals
will be sent or animal won't be sent to space. So animals can be sent to space for experiments, can be sent to space, but for experiments. Because अगर इंसान नहीं रह सकते तो एनिमल्स भी नहीं रह सकते वहां पर. लेकिन फिर भी अगर कुछ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, then animals can be sent to space for their experiments. Number 3, water will be found over there or water won't be found. So water won't be found in space in liquid state as space is not supporting for life. Space जो है वो life के लिए support कर ही नहीं रही. Once I read कि वहाँ पर space में बहुत narrow belts हैं, ठीक है, जहाँ पर जो है वो इस तरह का टेम्परेचर है कि मतलब जिस तरह का जमीन पर टेम्परेचर बहुत नैरो बेल्ट है, राइट. तो अगर उन बेल्ट के अगर बिलो हो जाता है तो इंतहाई ठंड चिल हो जाता है एटमॉस्फेयर, अगर उसकी आउट चला जाता है तो हर चीज जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाती है. तो इस वजह से बात अर्थ इज ब्लेस्ड इन दिस वे कि यहाँ पर जो है वो हर चीज और जिंदगी के लिए जो है वो चीजों का जो लिक्विड है लिक्विड में होना जरूरी है, जो सॉलिड है उनका सॉलिड में होना जरूरी है. ओके, इस तरह का टेम्परेचर हमें लाइफ के लिए चाहिए. सो अगर वाटर लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में होगा तो लाइफ पॉसिबल होगी, अदरवाइज नॉट. सो वाटर वोंट बी फाउंड इन स्पेस इन लिक्विड स्टेट, okay, as the space is not supporting for this. This is my prediction. 4, life will be discovered or life won't be discovered. Life won't be discovered anywhere in the space except Earth. So prediction is life won't be discovered anywhere in the space except Earth. देखिए ये एलियन दिस दैट और ये सब की सब ये इमेजिनरी चीजें हैं. ये इसमें रियलिटी नहीं है बेटा. ओके, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी बात जो है वो सामने नहीं आई कि ऐसा हो. तो आइंदा भी ऐसा जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है. सो लाइफ वोंट बी डिस्कवर्ड एनीवेयर इन द स्पेस एक्सेप्ट अर्थ. हमारी ये जो गैलेक्सी है यहाँ पर तो कम से कम ऐसा कुछ एक्सप्लोर नहीं हो सका, ठीक है, और अदर गैलेक्सीज भी कुछ ऐसी ही हैं. ओके, लेकिन हमें जो जब हम होली वर्ड ऑफ गॉड पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी किसी तरह का जो है वो हमें इस तरह की कोई जो है वो साइन नजर नहीं आता. बट यू नो गॉड शेयर्स एवरीथिंग विद मैन. ओके, लाइफ वोंट बी डिस्कवर्ड और साइंस भी इस बात को शो करती है कि जिंदगी जो है जमीन के अलावा कहीं और नहीं मिली. So life won't be discovered anywhere in the space except. Okay, let's see what's next on the next slide. Project a great expedition. Project a great expedition. Page 35. Right side पर देखिए सबसे ऊपर. तो ये है कि प्रोजेक्ट क्या है बेटा? ग्रेट एक्सपीडिशन के बारे में. You are going to research and write about a great expedition. Like then he's on page 32. It can be a recent expedition or one from a long time ago. Okay, लेकिन आप किसी और के हवाले से भी आप जो एक्सपीडिशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं. जैसे कि नीचे लिखा हुआ है तो फर्स्ट चूज एन एक्सप्लोरर. कोई भी एक एक्सप्लोरर चूज करें और उसके बाद फिर नीचे दिए गए जो कुछ क्वेश्चंस हैं आपने उनके बारे में आंसर्स करने. राइट बेटा? तो यहाँ पर लिखा हुआ है मार्को पोलो. चलिए हम मार्को पोलो को ही चूज करते हैं. ओके, लेट्स चूज मार्को पोलो. ओके, अगर ऐसी बात है तो आइए जरा पहले मार्को पोलो के बारे में, क्योंकि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सो मेनी थिंग्स अबाउट मार्को पोलो. सो लेट्स सी हु वाज द मार्को पोलो. ओके बेटा, मार्को पोलो वाज अ वेनेशियन मर्चेंट. दुरानिया है इसका बेटा 1254 up to 1324. Okay, he born in 1254 and died in 1324.
So he was a Venetian merchant believed to have journeyed across. You can see on your screen, please, right now. Also, I'm going to be reading to this content, and also you can see that. Okay, Marco Polo was a Venetian merchant believed to have journeyed across Asia at the height of the Mongol Empire. He first set out at age 17 with his father and uncle, Niccolo Polo, and Mafio Polo, traveling overland along what later became known as the Silk Road. Upon reaching China, Marco Polo entered the court of powerful Mongol ruler Kublai Khan, who dispatched him on trips to help administer the realm. Marco Polo remained abroad for 24 years. Though not the first European to explore China, his father and uncle, among others, had already been there. He became famous for his travels. Okay, beta, this is the introduction of Marco Polo. Okay, तो 17 एज में वो अपने बाप और अपने अंकल के साथ उसने ट्रेवल किया और उन जगह पर वहां से गुजर कर गया जिसको आज सिल्क रोड कहते हैं और चाइना पहुंचा मार्को पोलो और उसके अंकल जो है वो मंगोल रूलर कुबलाई खान के जो कि एक बड़ा पावरफुल रूलर था के दरबार में पहुंचे राइट और उसने क्या किया वो डिस्पैच हिम टू ट्रिप्स टू हेल्प एडमिनिस्टर द रियलम कि वो दौरे करे और गवर्नमेंट हुकूमत ये सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करे ओके मार्को पोलो जो है वहां पर 24 इयर्स तक रहा ये सिर्फ ये पहला एक्सप्लोरर नहीं था कि जो वहां पर पहुंचा बल्कि और भी यूरोपियन जो है एक्सप्लोरर वहां पर गए थे जिनमें फादर उसके अंकल भी वहां पर उनमें शामिल थे ओके बहरहाल मार्को पोलो अपनी ट्रेवल की वजह से मशहूर Okay, let's see beta project great expedition. First, what's written there? First choose an explore. हमने चुना मार्को पोलो को. Number two, find out the following. और उसके बाद अब ये मार्को पोलो के बारे में हमें कुछ information we are to collect here. When and where did they live? They live. यहाँ पर they लिखा हुआ. Okay. they क्यों लिखा है? Why? ये मार्को पोलो के बारे में बात नहीं हो रही एक्चुअली प्लूरल ये प्लूरलिटी हमें यहाँ पर मिलती है अगर मार्को पोलो का सिर्फ जिक्र होता तो फिर हमें सिंगुलैरिटी मिलती मतलब व्हेन एंड वेयर डिड ही लिव तो ये ही लिव नहीं लिखा बल्कि दे लिव लिखा हुआ तो ये तीन लोगों की बात है माफियो मार्को और दूसरा जो है क्या नाम है उसका निकोलो निकोलो एंड माफियो निकोलो पोलो एंड माफियो पोलो और मार्को पोलो इनकी बात हो रही है ये हुई तीन when and where did they live beta they lived in Italy Europe in the year 1254 onward ये 1254 में तो ये पैदा हुआ और उसके बाद वहीं पर ही रहा ठीक है उनके फादर और बाप तो इस साल में वहां पर थे तो ऑनवर्ड और बाकी का टाइम जो आगे है वो भी वो उधर ही रहे राइट और जब वो 17 का हुआ तो उस वक्त फिर वो अपने बाप और अपने फादर के साथ वो एक्सपीडिशन पर निकला राइट बेटा Number two, question two. What did we know about his early life? This is very interesting. Sir, you can't give this question on screen. मैं आपके मैसेज को पहले देख लूं. Okay, what is this? Okay, sir, you can't give this question on screen. कौन है? हैदर जावेद. क्यों भाई? Sir, you can't give these questions on screen. क्या मतलब? What did you ask, beta? Okay. Anyhow, beta, I have prepared these questions for you so that you may understand it. Actually, I'm helping you. मैं आपको
आप आपको भी एक क्वेश्चन दे सकता था एज एन असाइनमेंट, लेकिन मैंने ये खुद करके दिए हैं आपको. ओके, what did we know about his early life? He was born to a wealthy Venetian merchant family. Much of Paulo's childhood was spent parent, parentless, and he was raised by an extended family. Paulo's mother died when he was young, and his father and uncle, successful Jew merchants, Niccolo and Matthew Polo, were in Asia for much of Paulo's youth. ये जो है ये उसकी अर्ली लाइफ थी कि he was born to a wealthy Venetian merchant family. Much of Paulo's childhood was spent parentless, and he was raised by an extended family. Okay, Paulo's mother died when he was young. His father and uncle successful gym merchant. Okay, जी. Next see question 3. Where did they travel from and do? And to? Where did they travel from and to? Marco Polo, his uncle, and his father traveled from Europe to Asia. Why did they go? It was their trade expedition. Are you following? Why did they go on this expedition? Actually, it was their trade expedition for this reason, for trade purpose. Question 5. What dangers did they meet? Answer is the biggest danger that Marco Polo faced was crossing the vast distance and harsh territory between Venice and China in 1275. Question 6. What did people think of them? They thought that they have lost and died somewhere. Okay, behind. वो पीछे जो लोग थे वो समझते थे कहीं गुम हो गए because for 24 years they didn't come back to their native land, and people thought that perhaps they have lost somewhere and they have died too. To see question 7, how long were they away from home? See here beta, they remained away from home for 24 years. 24 years तक जो है वो वहाँ पर वो बाहर रहे चाइना और कुबलाई खान के दरबार में और वहाँ पर काम करते रहे और जिसकी वजह से 24 years they spent over there. Okay. Question 8. What happened when they returned? जब वापस आए तो उस वक्त. Okay, teacher, thank you so very much for the reminder. I'm going to close it just after this question. What happened when they returned? Just a few years after returning to Venice from China, Polo commanded a ship in a war against the rival city of Genoa. He was eventually captured and sentenced to a Genoese prison. Right? जब वो वापस आए पहली बात तो ये हुई कि लोगों ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया, समझ नहीं आया ये वही लोग हैं या नहीं. राइट? जब उन्होंने अपने लिबास में छुपे हुए कीमती जेम और जो है वो मोती दिखाए, राइट, पर्ल्स, जेम्स, तो तब उन्हें यकीन आया था कि ये वाकई वही लोग हैं. और उसके बाद फिर ये पोलो जो है एक वॉरशिप की कमांड करने में वो पकड़ा गया और उसके बाद उसको सेंटेंस होगी, वो प्रिजन में जेल में चला गया. ओके जी. He was eventually captured and sentenced to a Genoese prison. तो बेटा